Good morning, all. Good morning, Abhilash, Monica, Riajan, Priyanshu Thakur, Lipsarani Sahu, Shraddhanjali, Ankita, all are there. Very good morning to all of you. Hope all are good at home. So last class रे हमने प्लान कौन सब पढ़ते वीडियो ऑडियो ठीक अच्छे ना समझते देखी नियो लास्ट क्लास रे पिला हम पढ़ते रे ऑप्टिक्स रो पढ़ते रे ऑप्टिक्स रो लास्ट थला हमर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़िले कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़िले लास्ट को माने टेलीस्कोप पढ़िले रिफ्लेक्टिंग टा हमर सिलेबस अछि तो सेटा हम कंप्लीट करथिले तापरे आज हम पढ़िबा नुवा सेकंड पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स दैट इज वेव ऑप्टिक्स तो एटा 17 हमने क्लास लागिवो कंप्लीट हि जिवो तापरे इलेक्ट्रॉनिक 17 हमने क्लास लागिवो टोटल 14 टा 15 टा हमने क्लास लागिवो तमरो सिलेबस कंप्लीट होबा पई सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तमन सब जानिलो टेलीस्कोप विषय पढ़िलो तो रे ऑप्टिक्स एरा थिला त कहजे मध्य ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो सेटा हम कोन पढ़थिले लाइट रो interaction with the objects which is having more dimension compared to the wavelength of light रो wavelength अनुसार हमें देखुथिले काहरो जो ऑब्जेक्ट थिला ऑब्जेक्ट गुडा करो डायमेंशन बहुत अधिक थिला कंपेयर टू wavelength of light किंतु हम वेव ऑप्टिक्स रे कोन पढिबा इंटरेक्शन ऑफ लाइट रो कोन सब केमती इंटरैक्ट करछि तार बिहेवियर कोन केमती कोन होछि with the object having dimension comparable to the wavelength of light जदि हमें छोटो छोटो ऑब्जेक्ट को नबा ताको जदि हमें रखिबा तो ता सहित केमिति इंटरैक्शन आछि कार लाइट रो तार विषय आज हम पढिबा कोथरे वेव ऑप्टिक्स रे तो एटा हम आगु स्टार्टिंग रे लिखि देथिले वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स रे नया चैप्टर समस्त मन रख वेव ऑप्टिक्स एम लिखि दोछि वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स हम वेव नेचर विषय पढ़िबा लाइट रो को नेचर पढ़िबा वेव नेचर पढ़िबा तो वेव नेचर त जानिचो लाइट इज वेव as well as it is a particle तो माने डुअल नेचर पढ़ा जायतिला किछि एक्सपेरिमेंट अछि जोटा कि पार्टिकल बोली प्रूव करूची जेंति आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हला कॉम्पटन इफेक्ट हला डी ब्रोगल्स इक्वेशन दा तम कोन प्रूव करची वेव बोली तो हमर सेंती वेव लाइट रो वेव प्रूफ पाई मध्ये आहुरी गोटे बहुत गुडा अछि एक्सपेरिमेंट जोटा कि हमें ए चैप्टर रे पढिबा इंटरफेरेंस हला किबा डिफ्रैक्शन हला किबा पोलराइजेशन हला सेडा को शो करूची जे लाइट टा होची वेव बोली तो लाइट रो केमिति तार बिहेवियर चेंज होची व्हेन इट इंटरैक्ट्स विथ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स तो समस्त आसी जानतु गुड मॉर्निंग ऑल के आसले विश्वजीत सुजीत तुषार दीप्ति विकास तुषारंजन नायक दीनबंधु मेहर ओके ऑल आर देयर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो आज देखिबा फास्ट देखिबा लाइट रो जो वेव नेचर अछि फास्ट हम के कहथिले हाइजेन जन साइंटिस्ट थिले से ता कहथिले जे लाइट टा वेव बोली फास्ट न्यूटन आस्थिले न्यूटन कहथिले जे लाइट टा होचोडे पार्टिकल कॉर्पस्कुलर थ्योरी ता कहथिले कॉर्पस्कुलर थ्योरी माने लाइट बिहेव्स एज ए corpuscle means particles तो लाइट टा पार्टिकल छोट छोट पार्टिकल द्वारा तयारी बोली न्यूटन प्रथम कहितले जोटा कि बहुत दिन पर्यंत चलीथिला पाखा बाकी 60 to 70 इयर्स पर्यंत समस्त लाइट को पार्टिकल बोली मानुथिले तापर हमर आस्तले हाइजेन कहले कि ना लाइट टा वेव सी तार सब जाक लॉ प्रूव करले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब लॉ को प्रूव करले तो लाइट को वेव बोली मध्य कहा गला तापर सेमती हमर साइंटिस्ट आस्थिले के प्लॉन्क्स से पुनी कहले पार्टिकल तापर मैक्सवेल आसले तापर फाइनली समस्त साइंटिस्ट कंक्लूड करले जे लाइट टा पार्टिकल होची as well as वेव जोटा कि हमें डुअल नेचर ऑफ लाइट रे
ऑलरेडी पढ़ी सारी ओके। तो आज हम देखिबा फास्ट हम देखिबा वेव फ्रंट। वेव तो जानिचो, वेव माने सब जानिचो, वेव तरंगता कोडिया रे कहंती डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। वेव रो मीनिंग हला कोन डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मानकर वाइब्रेशन हेले बा जदि गोटे मीडियम रे डिस्टर्बेंस हला, मैं एठी कथा कहूची माने मो सराउंडिंग मीडियम रा डिस्टर्ब हला, डिस्टर्बेंस टा कोड क्रिएट होची मोर एठी जो वोकल कॉर्ड अछि से डिस्टर्ब होची, से वाइब्रेट करूची। तो वाइब्रेट होबा द्वारा साउंड टा जनरेट होची जोटा कि मीडियम रे से हिसाब से तार नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट कला, से तार नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करबो, फाइनली जाय कि तुम कान रे सुनि पाछो जहा जो सेला वेव कहंती। डिस्टर्बेंस इन मीडियम वेव फर्स्ट ईयर रो वेव ऑसिलेशन माने वीक छ ए चैप्टर बुझिवा कष्ट हबो। तो फर्स्ट ईयर सेति पय फर्स्ट ईयर पढाला समय रे पाइतला वेव ऑप्टिक्स टा सॉरी वेव ऑसिलेशन टा बहुत इंपोर्टेंट सेकंड ईयर से जिंस हमें बहुत जिंस हमें सेकंड ईयर मध्ये पढिबा वेव रो। तो वेव रो किछि कैरेक्टर को दोची एडा कहला कोन ए जागे एडा को जीवो वेवलेंथ, ता कोन को जीवो वेवलेंथ, एडा को जीवो वेवलेंथ जानतो दिस इज नोन एज वेवलेंथ। हाउ एडा ला एम्पलीट्यूड, आकु कहते एम्पलीट्यूड केते ऊपर को अछि, आकु को एडा ला एम्पलीट्यूड ए लिखा जाय। एडा कहते क्रेस्ट, एडा कहते ट्रॉप, क्रेस्ट ट्रॉप। ए जो हाइट टा को कहते एम्पलीट्यूड केते हाइट ऊपर की बा तळ को अछि ता कहते एम्पलीट्यूड, ऊपर को थिले क्रेस्ट, तळ को थिले ट्रॉप। एडा सब सुनिथिबो आगुरु। आउ एठी सब एंगल रे थाए, ए एंगल एडा केते एंगल टोटल आसीबो 2 पाई, टोटल एंगल आसीबो केते 2 पाई। छोट छोट बेसिक जिंस आगु दरकार हबो मु रिवीजन कर दोची। एडा हला पाई, एडा केते पाई बाय 2, एडा सब जानि थो। एडा कह जाय पाथ, लैम्बडा होची पाथ, एंगल रे आसले ता कह जो फेज, दीटा लिखो गोटे हला पाथ आ गोटे हला फेज। मन पकाओ फर्स्ट ईयर पढ़ा हेतला एडा सब पाथ है गोटे फेज। एंगल रे जदी रिप्रेजेंट करचो दैट इज फेज, जदी लैम्बडा रे रिप्रेजेंट करचो सेटा कह जिवो पाथ। लैम्बडा पाथ पई फेज होची 2 पाई। एडा छोट छोट रिलेशन तो फर्स्ट ईयर पढ़ा जायतिला, खाली जस्ट रिवीजन एडा न आगु हमें जानिबा सिंपल जिंसो बेसिक जिंसो। पाथ फेज जानलो ताको भीतर गोटे रिलेशन थिला, रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज, पाथ डिफरेंस ऑफ फेज डिफरेंस। से रिलेशन दा मने पकाओ, से रिलेशन को नै कि क्वेश्चन पचरा दे 2020 रे मध्ये गोटे सिंपल क्वेश्चन आस्थिला। हम फर्स्ट रिलेशन ता लिखि दोची, तापर हम विषय जानिबा वेव फ्रंट कोन वे ये विषय रे। तो वेव्स जानिछो सब, वेव्स माने कोन डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम। पार्टिकल रो वाइब्रेशन द्वारा जहां भी क्रिएट हुए ता कह जे वेव। वेव रे मन रखिता प्रत्येक पार्टिकल निज निज जगह रे वाइब्रेट करथांती। एठी जो पार्टिकल अछि से ऊपर तळ होथिबो, एठी जो पार्टिकल अछि से ऊपर तळ होथिबो, एठी जो पार्टिकल अछि ऊपर तळ होथिबो। ए पार्टिकल एठी जाउ नथिबो के ए पार्टिकल एठी आस नथिबो, खाली जस्ट ट्रांसफर होय कोन एनर्जी और मोमेंटम रो। सिंपल जिंस उडा को बेसिक जिंस जोडा को क्वेश्चन में तुम पचरा सब क्वेश्चन। वेव रे कोन हुए तो पार्टिकल्स वाइब्रेट इन देयर पोजीशन, रेस्पेक्टिवली पोजीशन में माने वाइब्रेट करंती। दे जस्ट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम हियर टू द फाइनल एंड वर्ड भी जाउची, फाइनल पर्यंत से डिस्टर्बेंस बा एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करके नियंती। सपोज तुम जेंति कहलो गोटे लाइन एठी आइचो, कोन काउंटर लाइन एठी आइचो, पछो जण धक्काटे मारिला, तो धक्काटे मारिया द्वारा सब आगु पडिलो, आगु जीवरी किंतु जणे धक्का मारथियो पछो वाला द पर्सन स्टैंडिंग बैकवर्ड ही जस्ट पुशेस। तो से जो धक्काटे से मारथियो तो आग लोक को भी फील हो, से आग लोक को भी धक्का मारला भले लागिवो, से आग लोक को भी लागिवो धक्का मारला भले, किंतु मारिथियो के पछ लोकटा ही मारिथियो। जणे मारुची, जणे जदी एनर्जी सप्लाई करूची से एनर्जीटा फास्ट लोक फास्ट रे जे थिया हेतो ताको लागियो जे मो पछ लोकटा मते धक्का मारची। तो एनर्जीटा लास्ट टू फास्ट जाके ट्रांसफर होय, वेवटा भी से बळा जाय, किंतु पार्टिकलटा निज निज जगह रे सब थिबे, से आगु जेकुथे कोन पछु आसीबो, सेटा वाइब्रेशन हुए। तो सेति पय वेव को दुई प्रकार अछि, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव। तो सेटा का हम बेसी डिस्कशन करबानी। फास्ट देखिबा पाथ और फेज भितरे रिलेशन कोन अछि। तो पाथ जानिलो लैम्बडा पाथ पय केते थिला हमर, लैम्बडा पाथ पय फेज केते थिला 2 पाई। तो एटा लिखि दिथा रिलेशन डाटा फास्ट रे पढा हेतिला, एटा तो
सिंपल जिनसा आगे लिखि देता रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस समस्त लिखि था 2 मार्क रो क्वेश्चन आसी जाए। एटा फर्स्ट ईयर पढ़ाई हितला सेति पे हम बेसी नौनी फर्स्ट ईयर तुम मन पकाई दियो फर्स्ट ईयर पढ़ाई हितला पाथ डिफरेंस आउ फेज डिफरेंस जो माने जानि नबी निजे चाहिले भी 2 मिनिट लागियो 1 मिनिट रे संगे संगे बाहर कर परिबो पाथ रो फेज को केमते रिप्रेजेंट करिवो फेज डिफरेंस देथिले पाथ डिफरेंस केमती फाइंड आउट करिवो। सिंपल जिंसो मथि लिखुची फॉर path lambda phase difference केते थाए path difference lambda पाई phase difference केते थाए phase difference is how much 2 pi कहना एंगल ले केते जो 2 pi एंगल जाइतले lambda जदी phase lambda जदी path difference अछि बा path अछि ताले phase difference होछ केते 2 pi कहना ओटा कंप्लीट वेटा मन पकाओ एठी वाला एठी दि आसला तो एटा हला lambda एटा हला 2 pi सो एंगल है 2 pi lambda तो एटा ओटा मन रखि थाओ सेंती जदी हम कहै जे x path difference अछि तो एठी लिखिबा आउट लिखो फॉर x path difference x for path difference x path difference पाई फेज केते आसीबो फेज डिफरेंस केते होबो जे कोनोसी एनी जनरल सपोज वेव टे जाउची एनी जनरल सपोज एठी ना आसला लैम्बडा बाय 2 सपोज ए मझी रे एटा तो लैम्बडा बाय 4 एटा लैम्बडा बाय 2 पाथ पाई फेज केते पचाला तो तम ओटे रिलेशन मन रखता किबा 3 लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4 पाथ पाई फेज केते बाहर करो क्वेश्चन आसी होच पिलाने शॉर्ट क्वेश्चन फॉर पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाय 4 फेज डिफरेंस इज हाउ मच को एमते भी क्वेश्चन आसे तो सेटा हम केमिति करबा फॉर पाथ डिफरेंस x फेज केते हबो फेज डिफरेंस इज हाउ मच फेज डिफरेंस इज डायरेक्ट लिख दोछि केते 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x कहना लैम्बडा पाई 2 पाई 1 पाई केते 2 पाई बाय लैम्बडा यूनिटरी मेथड बाय एकक मेथड दा कोंती पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा पाई फेज हला 2 पाई a के पाई केते आ गोटे x पाई केते सो 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x हो तो एटा मन रखता रिलेशन बिटवीन का पाथ डिफरेंस रो फेज डिफरेंस आसला तो सेंती जदी तुम एनीथिंग कहले सपोज पाथ डिफरेंस अछि 3 लैम्बडा बाय 4 ताले सेटा केते फेज रो अछि बा केते एंगल रो अछि बा करो बा व्हाट विल बी द एंगल हियर तो एंगल जदी जानिया पहुंचो लिखिबो 2 पाई बाय लैम्बडा x जायरा लिखिबो 3 लैम्बडा बाय 4 तो लैम्बडा कैंसिल हो जिवो एटा हबो 2 पाई बाय 4 और पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 2 जहा भी आसीबो सेटा हला कोन हमरो कोन होची पाथ सॉरी फेज डिफरेंस तो एटा मन रखता 2 लैम्बडा बाय 2 पाई 1 पाई केते x पाई केते तो जहा भी थिबो तो माने इबेला कैलकुलेशन करि परिबो जदी पचारे हितबो सेमति जदी उल्टा रिलेशन पचारला फेज रो पाथ पचार थिबो फेज रो पाथ डिफरेंस पचार थिबो ताहले तो माने कोन करिवो वीडियो ओडे जदी रहउची खराब रहउची ताले कहबो हमें एडजस्ट करिबा हला तो एटा लिखि दै थाओ फर्स्ट एटा लिखि दै थाओ आगु दरकार होबो एटा तो फर्स्ट ईयर अछि सेकंड ईयर आपरे क्वेश्चन आसे सिंपल क्वेश्चन तो सेति पे एटा लिखिया पड़छि ए वर्ष बदे गोटे क्वेश्चन पचरा जायतिला केते गोटे देइतिला फेज डिफरेंस देइतिला पचाइतिला पाथ डिफरेंस केते होबो तो सिंपल रिलेशन कर पाइबो एटा समस्त लिखि नियो बहुत सहज जदी जो माने जानि पानो वेव गोटे कर दबो वेव टे कर दबो एटा लैम्बडा एटा हला 2 पाई ए तीन सेटा जानले हबो फेज रो पाथ किबा पाथ रो फेज तमे एती जानले कर परिबो
एटा लिखि नियो समस्ते फेज डिफरेंस आउ पाथ डिफरेंस भितरे तापर हमें नेक्स्ट लेख जदि उल्टा पचरा हिथिबो मु लेखुनी बट फिर भी कहि दोची उल्टाटा तो सपोज कहला केते पाथ फेज डिफरेंस देची सपोज 3 पाई बाय 2 देची कोआ वाला एति के फेज पाई पाथ केते बा एटा जदि एंगल रछि तो से समय रे वेवलेंथ केते बा लैम्डा केते तो सेटा कोन करियो पिला ने उल्टा रे देखो माने तमे जानछो 2 पाई फेज पाई पाथ डिफरेंस हला केते लैम्डा 2 पाई फेज पाई फेज ता मनो का एंगल रे आसे सदारे फेज ता हला 2 पाई पाई पाथ डिफरेंस लैम्डा तो 1 पाई केते लैम्डा बाय 2 पाई तापर दिया है केते 3 पाई बाय 2 सो 3 पाई बाय 2 पाई केते हबो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 3 पाई बाय 2 तो पाई पाई कटि गला एडा से केते लैम्डा बाय 4 तो तमरो पाथ डिफरेंस केते थिबो लैम्डा बाय 4 थिबो 3 पाई बाय 2 पाई फेज पाई पाथ डिफरेंस लागते लैम्डा बाय 4 तो तुम माने इ रिलेशन दा उल्टा रे भी लिखि परिबो तो एटा तुम माने पय रहला तुम माने कोन नबो जे 2 पाई फेज पाई पाथ है लैम्डा एटा नबो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर दे प्राय समय लिखा दे फाई रे फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर दे फाई तो फाई पाई केते हबो मेठी जनरलाइज कर दोची जनरलाइज रिलेशन दा कोन आसीबो एटा मन को कोथर कोडा को रिप्रेजेंट करछो एटा तुम पचरा हितला फेज डिफरेंस केते आसीबो बाहर करिवो पाथ रु फेज पाई एटा 2 पाई लैम्डा इनटू x किंतु यदि पचरा हितबो फेज पाई पाथ केते ताहले तो मान करो 5 फेज पाई केते हबो ए रिलेशन दा लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5 ए रिलेशन टा भी मन रखि थाओ लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5 एटा रिप्रेजेंट करिवो पाथ 5 फेज पाई पाथ होबे तिकी एटा फेज डिफरेंस एटा ला पाथ डिफरेंस फेज टा को एंगल ले निया जाए बारंबार कहूची पाथ टा को थरे निया जाए पाथ टा को निया जाए ओके कंप्लीटेड नेहा प्रधान मोनिका साहू देवस्मिता ओके समस्त सरी गला एटा मथो ब्रैकेट रे रखि थाओ एटा फेज पाई पाथ डिफरेंस रो रिलेशन एटा फेज सहित पाथ रो रिलेशन एटा पाथ सहित फेज रो रिलेशन एटा फेज सहित पाथ रो कंफ्यूज होबनी जमारू जति तुमको पचरा जायची वेवलेंथ रो केते डिफरेंस आसीबो त इ रिलेशन यूज करबो जति तुम पचराला एंगल रे केते अछि बा फेज केते अछि ताले लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5 तापर नेक्स्ट हम देखिबा वेव फ्रंट्स तो एबे वेव फ्रंट विषय रे पढिबा तो समस्त लेखो जोडा की क्वेश्चन आसे एटा क्वेश्चन आसे और फिर भी नेक्स्ट लेखिबा वेव फ्रंट स्टार्टिंग हम रहउची वेव फ्रंट कोन वेव फ्रंट कोन वेव जानिलो समस्ते वेव माने डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ए मीडियम तो बतन देखिबा वेव फ्रंट कोन वेव फ्रंट कहले कोन पिला मन रखता जदी जे कोन से तुम डिस्टर्ब क्रिएट कलो सपोज गोटे पॉन्ड अछि बा पोखरी अछि पोखरी तुम गोटे पत्थरटे पकेलो तो पत्थरटे पकेया द्वारा देखियो चारियाडे वेव जाउथिबो चारियाडे सब वेव क्रिएट गोल 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 है कि सब जाउथिबो तो सेउडा कहा जाय वेव फ्रंट माने कोन एडा गोटे पत्थरटे जाय पकेलो तो पार्टिकल स्थिर अवस्था रे थिला से डिस्टर्ब होला तो डिस्टर्ब होबा द्वारा वेवटा बाहर की याड गला सेंती एपट वेव बाहर की याड गला सेंती याड वेव बाहर की याड गला याड वेव बाहर की काहे चारियाडे डिस्टर्बेंस ता जीवो तो वेव फ्रंट कोन ना आमे कोन करबा जो पार्टिकल गुडा को समान फेज रे अछंती माने समान एंगल रे अछंती समान एंगल रे अछंती ताकू जदि आमे जॉइन करबा एठी न देखो ये भी सपोज एटा एंगल ला सपोज पाई बाय 2 ए एंगल ला केते पाई बाय 2 तो सेंती ए वेव रो भी पाई बाय 2 कुनियो ए वेव रो भी पाई बाय 2 कुनियो ए वेव रो भी पाई बाय 2 कुनियो ए वेव रो पाई बाय 2 पार्टिकल कुनियो काहे से ଗୋଟେ पर्टिकुलर ए एंगल ला पाई बाय 2 रे ये भी पाई बाय 2 रे रहिबो से जो हमें समान एंगल थिबो से गुडा को जदि हमें जॉइन करबा इट लुक लाइक ए सर्कल एटा कोन आसीबो सर्कल आसीबो ते जो सर्कल टा आसला एकु कह जे
This is called as wavefront. ये सर्कल आसला ए सर्कल को कहा जाए wavefront. आउथर कह दोची एठी डिस्टर्बेंस क्रिएट कलो डिस्टर्बेंस क्रिएट करिया द्वारा पार्टिकल रो वेवटा चार माने सब डायरेक्शन में गला तो सब डायरेक्शन में जेतले गला हमें सेही पार्टिकल गुडा को जॉइन कले जोडा को समान फेज रे अछंती मोटी जेनरल लाइन गोटे जे कोनसे एंगल पाई बाय 2 ने अछि जने पाई रे नेला जने 0 रे नेला जने 3 पाई बाय 2 रे नेला जे कोनसे एंगल लियो सेही एंगल रे जेति को पार्टिकल अछंती सेही पार्टिकल गुडा को जॉइन करो दैट will give you what a wavefront. तो wavefront रो जदी डेफिनेशन लिखिबा ताले ठीक होबो कोन wavefront रो डेफिनेशन नै परिबो the locus of the particles vibrating in a or in same phase in a medium. गोटे मीडियम रे समान फेज रे वाइब्रेट करथिबे सेमान को लोकस को सेमान को जॉइन कर जोटा आसीबो दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट wavefront. तो wavefront रो माने हला एठी लिखि परिबो the locus of all the particles which are vibrating in same phase which are vibrating in a same phase in a medium is called as wavefront. मन रखिथाओ बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा wavefront या पर शॉर्ट क्वेश्चन किबा 2 मार्क रो पचा देथियो wavefront माने जानिलो जोडा को समान फेज रे वाइब्रेट करूथिबे पार्टिकल गुडा को ताको जदि हम जॉइन करबा जेमितिया शेप आसीबो ता कहै छै wavefront मेठो जॉइन करली एटी जे सर्कल आसला तो आकु कहै जेबो स्फेरिकल wavefront. तो सेंती नेक्स्ट टाइम देखिबा wavefront रो टाइप्स तो समस्त लिखि दियो टाइप्स ऑफ wavefront लिखो टाइप्स ऑफ wavefront. तो तीन प्रकार wavefront अछि फर्स्ट लिखिबा spherical wavefront. प्रत्येक जिंस पिलाने फिजिक्स अछि तो फिजिक्स को तमर डेली लाइफ सहित रिलेट करबा को चेष्टा करो के प्रतिमा पुरहराज तेजस्विनी दुर्गा लिपि दलपति नेहा प्रधान समस्त कंप्लीट करलेनी तो तथापि लिखि दे जो मानकर कंप्लीट हेनी डासछि तो फील्ड ऑफ व्यू रे अछि तो हल ठीक अछि समस्त लिखिनो टाइप्स ऑफ wavefront. फर्स्ट लिखिबा spherical wavefront माने स्फीयर आकार आसीबो मैं एग्जांपल देली जस्ट के पूर्व पॉन्ड रे बा पोखर रे ओडे पत्थरटा पकेले जो वेव गुडा क्रिएट हुए चारि पटो जो गोल गोल देखा जाए गोल गोल गुडा को कहा जाए wavefront. जदी गोटे डायरेक्शन गलो सपोज एटा एंड गोल गोल हे जाउची तो जदी वन डायरेक्शन गलो ए डायरेक्शन गलो तो एठी जोटा आसीबो सेटा कहा जाय वेव. जदी वन लाइन ऊपर गला दैट इज ए वेव और जदी सब जा पार्टिकल को मिसे देलो दैट इज ए wavefront. वेव और wavefront भितर डिफरेंस टाला सेया wavefront माने समान फेज रे थिवा पार्टिकल को जॉइन करबा. Wave माने along a one line which the particles are vibrating in the what mean position. तो एटा लिखलो spherical wavefront. Spherical wavefront माने एटा लिखि दे थाओ the source खाली लिखि थाओ the source of disturbance if the source of disturbance लिखो if the source of disturbance is if the source of disturbance is a point source, if the source of disturbance is a point source, then the wavefront wavefronts are spherical wavefronts. Spherical wavefront.
जदि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कोन अछि पॉइंट सोर्स अछि जेंति एग्जांपल देले पॉइंट रे जदि हम कोन करबा गोटे एनीथिंग माने गोटे पत्थर हो कि जहाँ भी पकेलो सेठी जो वेव फ्रंट क्रिएट होए सेटा होची स्फेरिकल सोर्स तो वेव फ्रंट रो फिगर साइड रे को देथिबो स्फेरिकल एटा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एटा एस एठु वेव केनते आसीबो स्फेरिकल वेव फ्रंट चारि पट को गोल गोल हे जिवो पॉइंट सोर्स थिबे एटा स्फेरिकल वेव फ्रंट अब वेव फ्रंट रो जो डायरेक्शन जाने पहले ताको रे द्वारा जाना जाए ए पर्टिकुलर ताको रे द्वारा देखा जाए रे द्वारा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेस एटा रे पर एठी गोटे पार्टिकल अछि एठी पार्टिकल थिबो एठी पार्टिकल थिबो आकु जॉइन करले ए डायरेक्शन वेव टा पाई परिबो तो वेव फ्रंट रो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा जाए को डायरेक्शन में प्रोपागेट करूची तो प्रोपागेशन को रिप्रेजेंट करा जाए बाय arrow marks which indicates the direction of waves along this line eta भी along this line eta direction तो arrow mark द्वारा तो कहे रे एटा कोन कहे रे तो वेव फ्रंट जानलो समझते एटा लिखनियो एटा लिखनियो स्फेरिकल वेव फ्रंट तापरे नेक्स्ट अच्छा हम देखिबा स्फेरिकल वेव फ्रंट समस्त लिखनियो फिगर टाइप कर दबो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ फिगर टा करनो स्फेरिकल वेव फ्रंट समस्त करनो फिगर टा भी करनो Garbesh Thakur, can you say in Hindi? Hindi I can also speak, but this is for Odia medium students. That's why I am not talking in Hindi. हिंदी में भी बोल सकते हैं हिंदी में क्या होता है spherical wavefront मतलब क्या है if the source of I am talking in English just listen that one. Next one spherical wavefront. Next one is cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. So cylindrical wavefront means what? Cylindrical means the shape of the wavefront should be cylindrical. So cylindrical kete bela asibo if the source of disturbance is what? A line source. Which source? Line source. Line source. If the source of disturbance is a line source, then the waves are propagating here, here also, here also. ये चारों तरफ जाएगा ऐसे. So the particles, the waves are moving in all direction. If you are joining this, if you are joining the locus of all the particles vibrating in the same phase, there will be a circle in the downward also, here also, here also, here also. So it is the shape of the wavefront will be how much it looks like cylindrical wavefront. So cylindrical wavefront means if the particle if the source of disturbance is a line source. Which source? Line source. If the source of disturbance is a line source, then the wavefronts are which type of wavefront? Cylindrical wavefront. I am drawing once again. Just write down cylindrical wavefront. If the source of disturbance, if the source of disturbance is a line source. If the source of disturbance is a line source, if the source of disturbance is a line source, then the
wavefronts are cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. Source of disturbance is line source. Remember, so here the source of disturbance was point source, but here the source of disturbance is a line source. Suppose ट्यूब लाइट रे लाइट टा जळुची तो लाइट टा जळले चारियाडे जाउची तो चारियाडे जदी आसीबो से सिलिंड्रिकल हे के आसीबो काइना द सोर्स इज व्हिच सोर्स लाइन सोर्स तो लाइन सोर्स पई सिलिंड्रिकल आसे एडा हला सोर्स तो फर्स्ट जो वेव टा लाइन दी जीवो याड वेव आसीबो शैड वेव आसीबो याड वेव आसीबो द वेव्स प्रोपागेट्स हियर इन दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन हियर आल्सो the waves propagate in this direction. So if we are joining the particles which are vibrating in the same phase, so same phase if we are joining it will be a circle, here also circle, here to ऐसे just the waves fronts are moving like this. So cylindrical, the wave front is a cylindrical wave front. So cylindrical wave front कर देथिबो cylindrical wavefront एठी वेव टा चारि डे होची याडे मु रे द्वारा देखौची so this source of disturbance is line source, then we will get a cylindrical wavefront. ऐसे वास्ते पिलाने 2 मार्क रो क्वेश्चन से next one is write everyone should write this one. Next one is plane wavefront. Plane wavefront. Plane wavefront. So plane wavefront is, what is that plane wavefront? डायग्राम ता सुनो लाइन सोर्स अछि लाइन सोर्स रे डिस्टर्बेंस हो द्वारा वेव टा चारिएड जाउची द वेव्स आर मूविंग हियर इन दिस डायरेक्शन here in this direction in this direction in this direction. I am not indicating that, but the waves are moving in all direction. So if I am joining the particles in the same phase, here it will be a circle for this particle. For the next particle also it is a circle. For the next particle it is also a circle. So if I join, we will get a cylinder. Imagine this is a chalk. It is vibrating. So if it is vibrating, it is creating wave around this one. So for each particle there will be a circle. So if you are joining them, you will get a cylindrical wavefront. Next one, plane wavefront. The wavefronts at a larger distance or at infinite distance, you can say infinite, will be a plane wavefront. You take any type, two types there are spherical and cylindrical. You take any type of wavefront but at a larger distance. बहुत दूर को जाई चते देखिबो ताको, that will be a plane wavefront. सेटा केमिति देखा जिवो, प्लेन देखा जिवो. एटा छोटा पोर्शन नबो, ए छोटा पोर्शन ला काटि दियो larger distance रे, so it will be a planar wavefront. जदि हम स्फेरिकल कथा देखिला, एटा स्फेरिकल रे मिले जाउची, larger distance बोले एटा कोन हे जिवो, plane wavefront हे जिवो at a larger distance. And if we are considering the small portion of it also, it is also a planar wavefront. छोटा हिसाब रे नेले मध्य small portion
of the wavefront at a larger distance. Any type, cylindrical, if it is whether cylindrical or it is spherical wavefront, दोनों में से किसी को भी ले लो बहुत दूरी पर. If it is moving at a, if you are considering that at a larger distance, that will be a what? Planar wavefront. So planar wavefront, for planar wavefront, how the diagram is, this will be, you can say this is a planar wavefront. So these are the planar wavefront and you are representing it at arrow mark, the rays. These are called the rays. These are called plane wavefront. Larger distance, at a larger distance or infinite distance, the wavefront are planar wavefront. Just write it. Vishwajit Bhui, Abhispa Panda, Devendra Shah. Okay, very good. एटा लिखिनियो समस्ते. प्लेनर वेवफ्रंट समस्ते लिखिनियो. तापर हम इंपोर्टेंट जिंस पढिबा जोडा तमर क्वेश्चन आसे व्हिच मे बी आस्क्ड एज ए क्वेश्चन इन द last year they asked also. Huygen principle, very important phenomenon, that is Huygen principle. Huygen's principle. Huygen principle, important. This is very important for your exam. 3-mark question. It is very important. Remember. So Huygen principle. Huygen principle. Everyone should complete and write it. Next one is Huygen principle. Huygen's principle. Huygen principle. First principle तीनटा को लिखि लियो. मु डाकि नउची. First लिखि लियो. Each point on a wavefront तीनटा अछि. There are 3. तो plane wavefront को समस्ते ड्रा कर लियो. Because दोची each point on each point समस्ते फास्ट फिगरटा करो तापरे लिखिबो. एटा करियो फिगरटा दा लिखिबी. समस्ते एटा लिखि साला कंप्लीट साला मु इरेज करूची. तो लिखो फर्स्ट हाइगन प्रिंसिपल. फर्स्ट पॉइंट लिखो each point on a wavefront acts as a source of new disturbance. एटा समस्ते लिखिनियो. each point फर्स्ट लिखि चलो तीनटा अछि. सेकंड पॉइंट लिखिबा तीनटा हाइगन्स प्रिंसिपल. 3 there are 3 principles. So each point on a wavefront acts as a source of new disturbance. Next one, the disturbance spreads or moves. The disturbance moves
in all direction, the disturbance moves in all direction, with speed of light, in that medium and is called as secondary wavelets. प्रथमे लिखी सारो, first just write, then I will make you understand. It's not like that. Someone has written there, it's got to be, yes, it is I am from Odisha, I am talking in Odia language, and it is for 12th board for CHSE Odisha. This is, I am talking in Odia language. I can talk in English as well as in Hindi also, but for better understanding for Odia students, I am talking in Odia. Okay. Just write it. The disturbance moves in all direction with speed of light that in that medium and is called as secondary wavelets. Next, just write the third point. The tangent, just write it, the tangent drawn to the secondary wavelets, in the forward direction, it is very important. I will make you understand. Just write it. The tangent drawn to the secondary wavelets in the forward direction represents new wavefront. Represents new wavefront. Just write it. Or you can say secondary wavefront. You can say secondary wavefront or second wavefront. You can say that one also. Just write all the points, then I will make you understand here. Okay, I will try to talk in Hindi because many people they are also watching. They don't know Odia. Each point on a wavefront acts as a source of new disturbance. Just write all the points, make a note which is going to be asked in your examination. They may be asked for 3 mark or 2 mark question. Very important, 3 mark or maybe of 2 mark question. In NCERT also, in CPSE, those who are studying also. Just write, I am giving 2 minutes. So just write, everyone should write it.
Okay, completed sir. Aman Kumar Nayak, Krutanjali Meher, Priyanshu, Ipon, Lipi, Tushar. Okay, then just listen it. Each point on a wavefront acts as a source of new disturbance. Wavefront आपको पता चल गया, लेकिन wavefront में I told you that if it is a wavefront, suppose I am considering for spherical wavefront. Here also the particle is also vibrating. Here also the particles, all the particles they are vibrating. So this particle, each point on a wavefront, this particle acts as a new source of disturbance. The particles on this wavefront, each particle on this wavefront acts as a source of new disturbance. Here also another wavefront is there. These are the particles. This particle, all the particles, they are the source of new disturbance. क्योंकि the source is here. The source is here and the disturbance is creating here. And because of it, which wavefronts are coming? Spherical wavefronts are coming. So each point, if you are considering each point on this wavefront, they act as a source of new disturbance because it disturbs to the next particle. ये जो particle है आगे को भी क्या देगा? Energy. I told you that in the starting that the waves, what they carry? Energy. They carry the energy and momentum. Just for example, I told you how it looks. So each point on the source, on the wavefront acts as a, suppose consider any wavefront. Suppose this is a wavefront, spherical wavefront. Any instant of time, this is the wavefront. So these are the particles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose 8 particles are there. So each particle is a source of new disturbance. So it is a point source. It will create which wavefront? Spherical wavefront. तो इसके वजह से ऐसे wavefront मिलेगा. Here also one particle is there. It is also vibrating. Because of this, also a spherical wavefront will come. Here also one more particle is there. It is also vibrating. Because of that, spherical waves will come. हर एक point के लिए क्या होगा? Each point will act as a what? As a source of new disturbance. Here also one particle is there. It is also vibrating. Here also one particle is there. It is also vibrating. So all the particles create which wave? Spherical wavefront. For this, I am considering for spherical wavefront. So each point on a wavefront. This is any arbitrary wavefront. You are considering any arbitrary wavefront. And each point on this wavefront acts as a what? Source of new disturbance. This is the first point. Then the second one, the disturbance moves in all direction with the speed of light in that medium. You are considering this is suppose water medium, or you can say air or oil, any medium you just take. So in water medium, this particle is disturbing. This particle is also disturbing. This particle is also disturbing. Because of this, the disturbance spreads in all direction. और एक दिशा में क्या होगा? ये फैलेगा, इधर भी जाएगा, जाएगा. तो क्या होगा? इसके वजह से the disturbance moves in all direction. I am just writing that one. The disturbance moves in all direction with the speed of light in that medium. कौन से स्पीड से जाएगा? कितने? What will be the velocity of these waves? That is the speed of light. With what velocity? With speed of light. With speed of light in that medium. Suppose the speed of light in water is suppose 2 point something. 2.2 something, that is 10 to the power 8 meter per second. With that velocity, this waves moves. This waves moves. So that I have written here.
with speed of light in that medium and is called as secondary wavelength. This one is called as what? Secondary wavelength. This disturbance, this disturbance, this disturbance, this disturbance. ये disturbance को मैंने कौन बोलते हैं? Secondary wavelength. Secondary wavelength. These are called secondary wavelengths. ताको हम कौन कहवाला? Secondary wavelength. तो जदि प्रत्येक पॉइंट गोटे कौन होची एक्ट एज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जहां द्वारा से जो डिस्टर्बेंस टा क्रिएट हैला से डिस्टर्बेंस टा सब आड़े जाए चारि दिशा माने चारि तरफ माने चारों तरफ जाएगा तो चारि आड़े गला जिबा द्वारा कौन हैला ना केते वेलोसिटी जाउची से जो वेव टा दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम केते वेलोसिटी रे सेही मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी जति के अछि सेही वेलोसिटी रे ही मूव करबो एंड दिस डिस्टर्बेंस जो आसला एटा कोइ एने भी फेल होय एटा हम गोटे करि एटा गोटे नाही इट इज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ए वाला डिस्टर्बेंस क्रिएट होची ए पार्टिकल द्वारा सेते ए पार्टिकल द्वारा भी सेते बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होची ए पार्टिकल द्वारा भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होची गोटे आई एम ड्रॉन वन सिंगल बट इट इज नॉट देयर ए सिंगल वेवलेट इट क्रिएट्स ए नंबर ऑफ वेवलेट्स सो आई एम जस्ट इंडिकेटिंग वन थर्ड पॉइंट the tangent drawn to the secondary wavelets in the forward direction represents the new wavefront. Tangents drawn in to the secondary wavelets, these are called secondary wavelets. These are called secondary wavelets. तो हमें कौन करिबा just draw tangent to the secondary wavelet. Secondary wavelet in the forward direction. को direction रे forward direction, backward direction नहीं जाय ना एटा पर हाइजन प्रूव कले सेटा हम जानिबा नहीं केमते प्रूव होला बैकवर्ड डायरेक्शन न थाए केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में थाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करिवो टेंजेंट ड्रॉ करो ए वाला टेंजेंट ड्रॉ कलो ए वाला हम टेंजेंट ड्रॉ कली फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस रिप्रेजेंट्स द न्यू वेव फ्रंट और ए कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट तो ए जो आसला एटा जो आसला ए जो टेंजेंट उडा को जॉइन करो एटा जो आसला this is called the secondary or new wavefront एटा थिला गोटे wavefront ता द्वारा एटा आसला सेमती एठी जो पार्टिकल रा थियो सेम डिस्टेंस होतिबो एठी पार्टिकल रा एंती गोल गोल से सर्कल आस्तिबो तार सरफेस को से जॉइन करो आ गोटे टेंजेंट आसीबो तो this the tangent drawn to the secondary wavelet एटा secondary wavelet ताको टेंजेंट ड्रॉ कराला को डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन आगु नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन को डायरेक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द न्यू वेव फ्रंट दिस इज द न्यू वेव फ्रंट दिस वाज ओल्डर वेव फ्रंट so it moves in the forward direction like that here also the particles are vibrating. Here also the particles are vibrating. If you draw the circles, it will be like that, and if you join them in the forward direction, that will represent the new wavefront. This was all about Huygen principle. Just write it. Just name it A, B, C, D. This is A dash, B dash. Just draw this figure also just write it this is the secondary wavelets these are called secondary wavelets and wavefront difference आपको समझ में आना चाहिए wavelets मतलब छोटा छोटा जो मिल रहा है पार्टिकल की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा है उसी की वजह से जो मिल रहा है that is called as wavelets but this is the tangent drawn in the forward direction is called as wavefront. So this is the new wavefront or secondary wavefront. This is the new wavefront. Just write it.
आउथरे बुझे दियंतु आउथरे कह दोची देखो थर्ड पॉइंट देखो द टेंजेंट ड्रॉन इन द secondary wavelets in the forward direction represents the new wavefront. Tangents drawn to the secondary wavelets एटा हला secondary wavelet तो तारो को हमें tangent draw करिबा in forward direction को direction में forward direction में tangent draw करिबा आगो direction तो forward direction में if you draw the tangents to the secondary wavelets एवडा सब secondary wavelets these are the secondary wavelets so this represents the new wavefront okay. So I am erasing this one and remember one point here very important you can say suppose this wavelets moves with what velocity? With the velocity of light. So how much distance it will take here the radius of this wavelets you can also calculate. Suppose the time taken is t. Suppose the time taken is t and the velocity of light is c and time taken is t. Then if you want to calculate, suppose you want to calculate this distance, you know that velocity equals to displacement upon time. So you want to calculate this displacement. So displacement equals to velocity into time. You know that the wavelets moves with the velocity of light, so you can say c into t. So if you want to calculate this distance d, suppose this radius you want to calculate, then you can calculate as distance equals to velocity into time. So c into t. So this much distance by radius of this wavelets is how much? C into t. If someone asks, just make a note and write it. D equals C into T. And one more thing, remember the time taken to move the wavefronts from here to here is same. Remember, always remains constant. The time taken by the wavefronts to move from one position to other position is always constant. Remember that one. It is always constant. मान लो this is the wavefront. This is in one medium. Suppose I am saying an example. This is one medium. These are the wavefronts. They are moving. Suppose the distance is d. This is suppose mu1. This is mu2. This is another medium. So after refraction, suppose it moves here. This is suppose d1. This is suppose d2. So remember the time from here to here is same as here to here. Suppose this is t1. This is t2. The remember t1 equals to t2 always. The time taken to move the wavefronts in each medium, you take any medium, is always same, remains same. The time always remains same. This is very important concept. If someone asked, this was asked somewhere in entrance examination, this distance and this distance, which one is greater and which one is smaller? You know the time period is same. Suppose mu1 is rarer and mu2 is denser. Mu1 rarer, mu2 denser. So the velocity, suppose v1, here velocity v2, light velocity of light is v1, here the velocity of light is v2. So where the light will move faster, here the light will move faster. So v1 is greater than v2. Velocity in this medium is greater than velocity in this medium. But the time period is same. Then you can find a relation between the distance. So these are the basic questions they may be asked
एबला क्वेश्चन मध्य आसे। Next one, just draw this one figure. Then next we will study about very important, that is next one, just write interference, very important, interference. There are, this is after that what we studied before, आमने आगु कौन पढ़ुथिले, आगु आमने पढ़ुथिले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को केमिति प्रूव करबा, हाउ वी कैन प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल, but it is not there in your syllabus this time, they have deleted that one, so we'll study about interference. Before that it was there, you can prove laws of reflection, also refraction using Huygen principle, but in this year it is not there, they have deleted that one, so we'll learn about interference. So what is that interference? Interference means, before that you should know about the principle of superposition. So what is that principle of superposition? If more than two waves are moving in a medium, सपोज गोटे मीडियम अच्छी जो ठीक ना दुई रु अधिक वेव्स जाउसंती, तो जीवा द्वारा कौन होची ना से मान को जदि हम सुपर इंपोज करबा, तो से मान जदि मिसेइबा, द नेट डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट. सपोज एटा तो फर्स्ट ईयर पढ़ाइतला, मने पकाओ फर्स्ट ईयर रे तो माने यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th that chapter, that is waves and oscillation. That time also I told you this is very important, this may be asked in the second year also. So let's know that one, interference. Before interference means, just write it, the redistribution of light in, just write it, redistribution of light energy when two or more light waves superimpose at a point. This is interface. मन करो दुई रु, there are two waves, this is one wave, this is one wave. If these two waves meet at a point, what will be the intensity of light energy? So the redistribution of light energy when two or more light waves, this is one wave, this is one wave, if these two moves, they meet at a point, what will be the intensity? Whether it is greater or it is smaller than this energy and this energy, that is known as what? Interference. In interference, we will study about principle of superposition. Principle of superposition. So what is that principle of superposition? This principle of superposition is also known as what? Interference. This principle of superposition is also known as what also? Interference. So just write it, principle of superposition. What is that principle of superposition? If everyone just write it, if two or more waves, I am just writing in the upward direction, principle of superposition I am writing here.
Just write interference, then I will write here. Everyone just write it. समस्त लिखि लियो. तापर हम ऊपर लिखिए principle of superposition. Then how will calculate the intensity, where it is maximum, where it is minimum, and interference is of two types. One is constructive, another one is destructive interference. We have studied in 11th. Constructive interference as well as destructive interference. समस्त लिखिन एटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिबा. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेखा समस्त एटा लिखि सार इंटरफेरेंस सरला समस्त करो. तापर हम देखिबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. समस्त लिखिन एटा को. तापर लिखिबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जस्ट राइट इट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हियर. if two or more waves are of comparable wavelength, two or more waves of comparable wavelength are moving in a medium superimpose means misiva, superimpose each other, then the net displacement first year पढिथिलो त माने मने पकाओ कोहा भी जायथला. then the net displacement at a point is equal to the sum of individual displacement. This is the principle of superposition which we have studied in 11th. If two or more waves of comparable wavelengths are moving in a medium superimpose each other, then the net displacement of at a point is equal to the sum of the individual displacement. Just write it everyone. Okay, completed. समस्त लिखो एटा. जदि दुई रु अधिक, if there are more than two waves, they are moving in a medium, and the waves of having comparable wavelength, that means दीटा कर जो वेवलेंथ अछि पाखापाखी समान थिबो किंबा समान थिबो और ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ यू कैन से आर मूविंग इन ए मीडियम. जदि दीटा गोटे मीडियम रे जाउसंती सुपर इंपोज मिसुसंती, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए पॉइंट, गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे केते डिस्प्लेसमेंट अछि जाने चाहछो, देन द net displacement equals to sum of the individual displacement. Suppose mo कहली y1, y2, y3, yn are the displacement of the particles or of the waves
These are the displacement of the waves, are the displacement of n number of waves if y1, y2, y3, yn are the displacement of n number of waves, then the net displacement of the particle is given by y equals to y1 plus y2 dot 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 yn. एटा होची प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जदि y1 y2 y3 होची n number of waves रो डिस्प्लेसमेंट, then the net displacement केते हो y equals to y1 plus y2 up to yn. समस्त लिखिनियो. तार प्रूफ टा मध्ये तमरो करा जायतिला कोठी फर्स्ट ईयर करा जायतिला मने पकाओ. आ 5 मिनिट पढिबा बेसी न 5 to 10 मिनिट्स हम नबा. हमरे क्लास को बंद करिया, नेक्स्ट काली हम पढिबा. एटा तुम फर्स्ट ईयर पढिथिलो. एटा हम कहितली फर्स्ट ईयर जो माने स्ट्रांग अछो वेव और ऑसिलेशन दे इट विल हेल्प देम. सेते फर्स्ट ईयर तुमको भल से पढा जायतिला, ताको रिवीजन करबो जाय कि देखि नबो नोट्स गुडा को देखिले जानि परिबो. से समान जिनसेटी पढिबा. सपोज y1 equals to suppose a1 sin omega t. This is the general equation of a wave. Y equals to a sin omega t and y2 equals to a2 sin omega t plus phi. Therefore, this is another equation. This is the displacement of, or this is the wave equation of a wave. This is the wave equation of a second wave. That is why a2 equals to sin omega t plus phi. This phi is the phase difference between these two waves. दीटा को वेव भितरे जते फेज डिफरेंस अछि फाई रो फेज डिफरेंस को जथि बाय एति के आदर रे अधिक आगे रे अछि. प्लस फाई मींस एटा टिके पर स्टार्ट हेछि, एटा फाई एंगल रे. सपोज दीटा वेव अछि, आउट वेव फाई फेज डिफरेंस 90 अछि. फेज डिफरेंस 90 माने सेकंड वेवटा ए2 स्टार्ट हे दैथो. फेज डिफरेंस 90. सो दीटा को एठी डाटा स्टार्ट होला ने डिफरेंस केते 5. एठी मु एंगल लेछि 90, तो एनी जनरल लाइन 30 40 60 20 एनी एंगल 5 अछि. तो एटा स्टार्ट होला एठु होला आउट एटा 5 डिफरेंस रे स्टार्ट हेछि. सो नेक्स्ट टाइम जे देखिबा नेट डिस्प्लेसमेंट, एटा मु इरेज करूची. नेट डिस्प्लेसमेंट केते हम देखो. नेट डिस्प्लेसमेंट केते हो, what will be the net displacement? What will be the net displacement? According to the principle of superposition, net displacement equals to y equals to y1 plus y2. Net displacement equals to y1 plus y2. तो लिखिनियो y equals to a1 simple mathematics plus a2 sin omega t plus phi. Just write the formula sin a plus b. I am just writing a1 sin omega t plus a2 sin omega t into first year करा है already cos phi plus a2 cos omega t into sin phi.
here they see sin omega t, just take it common, so you can write a1 plus a2 cos phi into sin omega t. Simple mathematics. Sin a plus b equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. I am just taking sin omega t plus, here you can write a2 sin phi cos omega t. I am taking, let see here, a1 is also constant, a2 is also constant, and phi is phase difference. This is also constant. a1, a2 cos phi, these all are a constant, so I am writing is that a1 plus a2 cos phi are equals to a cos theta, and a2 sin phi, it is also constant, so I am writing a2 sin phi as a sin theta. Simple mathematics, 2 मिनट लागिवो सजिवो. एथे मैथ खाली अछि किछि नाही. sin a plus b रो फार्मूला पला sin ओमेगा t कॉमन रा फर्स्ट ईयर करा जायछि सब सेक्शन में, फिर भी आउ थेर दा को रिवीजन हिसाब कर दोछि. और के कोलानी चला मन so revision हिसाब कोछि. दिस इज कांस्टेंट a1 होछि एम्पलीट्यूड, a2 होछि एम्पलीट्यूड, एकु कहै एम्पलीट्यूड. so a1 a2 cos phi, a cos theta, a2 sin phi is also constant, a sin theta. पता नहीं एटा को ए क्वेश्चन में पुट करनियो. समस्त लिखि चालू थाओ. सिंपल मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर पढिचो तो कंफ्यूज होमार किछि नाही, निजे लिखि चलो कहि परिबो. तो एठी a1 plus a2 अगर a cos theta पुट करो, so y will be how much, a cos theta into sin omega t plus एटा को लिखिबा कोन a sin theta, so a sin theta into a sin theta into cos omega t. एटिके देखो a cos theta sin omega t a, एटा देखो sin a plus b रो फार्मूला sin a into cos b plus cos a into sin b. तो एटा हम sin a plus b रो फार्मूला. so you can write y equals to a कॉमन पळे आसीबो sin omega t plus theta, sin a into cos b plus cos a into sin b. so it is sin a plus b रो फार्मूला. एटा जो आसला एटा हला रिजल्टेंट वेव माने पका. दिस इज द रिजल्टेंट वेव. आ एटा होची रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. त हमें बाहर करबा a रो वैल्यू केते, थीटा रो वैल्यू काली हमें नेक्स्ट क्लास रे करबा. a रो वैल्यू जो फाइनल एम्पलीट्यूड आसला, ए दीटा को मिसेबा द्वारा y1 और y2 को मिसेबा द्वारा a हला एम्पलीट्यूड. तो से a रो वैल्यू केते, थीटा रो वैल्यू कोन होबा दरकार कोन है, हमें नेक्स्ट क्लास रे सेटा को डिस्कशन करबा. ता सहित किछि क्वेश्चंस करबा, देन हमें नेक्स्ट पढिबा योर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट. आज तो तुम समय हो जाइछि, वर्तमान 9टा हेलानी. सो समस्त पेशेंस रखिलो, पेशेंस सहित देखिलो वीडियो, बहुत भल लागला. धन्यवाद समस्त को, थैंक यू एवरीवन. जेहेतु समस्त देखुछ एते माने समय धरिके 1.5 आवर आई थिंक. सो टिके जीव फास्ट ईयर पाठ टिके रिवीजन कर दबो. आज जहाँ जहाँ कहली स्टार्टिंग रू सेटा टिके देखिके आस्थिबो. काली हमर सेटा निहाती दरकार, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तांकर रिलेशन कोन. सो काली रो क्लास हमें नेक्स्ट को प्रोसीड करबा. एतिक रे थाओ. दिस इज लिख देथिबो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. दीटा को मिसेबा द्वारा एटा जो आसला एटा हला रिजल्टेंट. दिस इज द जनरल इक्वेशन y sin ओमेगा t plus थीटा. तठे हमें काली ए रो वैल्यू केते एटा सब बाहर करे. बहुत सहज. एटा फर्स्ट ईयर करा हेतला, टिके देखि देले तुमन को मन पड़ जिवो. ओके,
सो थैंक यू एवरीवन, हम आज क्लास को काले समस्त आसीबो। थैंक यू।